Can you hear me now? मैं म्यूट पे थी नहीं यार, पता नहीं कैसे हो गया। ओहो हो। Now am I audible? I think now I am audible, है ना? Oh, how sad is that? फिर से announcements कर दूं? रोना आ रहा है मुझे। ऑलराइट गाइस, एक बार क्विक राउंड ऑफ अनाउंसमेंट्स फिर से करने ही पड़ेंगे, तो अब क्या किया जाए। वेल सॉरी, माय अपॉलॉजीज, गलती हो गई। हाँ, तो अभी कैट लाइव जरूर यूज करना गाइस टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी। ये रहे कुछ नए नए प्यारे प्यारे बैचेस। मिशन सक्सेस बैच है फॉर कैट 2022 एंड मिशन सक्सेस बैच है, ओ एक्सेलेंस बैच है और मिशन सक्सेस बैच है, बहुत प्यारे प्यारे एजुकेटर्स के साथ। याद रहे रेफरल कोड एक ही है अभी कैट लाइव। ऑल्सो गाइस, exciting news है CAT and OMIT aspirants के लिए। if you want to buy a plus subscription for 12 months, 18 months or 24 months, you will get 10% off on using my code, as well as a complimentary campus placement IT job subscription also for free। जिसने भी मुझे कॉल किया, थैंक यू मेरे बच्चे, मेरी इस बेवकूफ़ी को सही करने के लिए। there was something that was going wrong with the streaming। anyway, आइकॉनिक के बेनिफिट्स देख लेते हैं एक बार फिर से। पर्सनल गाइडेंस है, स्टडी प्लानर है, 1-to-1 लाइव मेंटरिंग है, टेस्ट एनालिसिस एंड एक्सपर्ट गाइडेंस भी है। सो देयर इज लॉट्स गोइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल द बेनिफिट्स ऑफ आवर प्लस प्रोडक्ट। सो वो बहुत ही एडवांटेजेस है गाइस। प्लस सब्सक्रिप्शन जो है हमारा बहुत ऑफ पे चल रहा है, 20% से लेकर के 60% तक ऑफ चल रहा है ऑन आवर प्लस सब्सक्रिप्शन। सो डू बाय योर प्लस सब्सक्रिप्शन राइट अवे। ऑल्सो द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। अब आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा लाइव मेंटरिंग है, लाइव डाउट्स है, लाइव कॉन्सेप्ट्स है। सो यू कैन गेट ऑन टू एन ऑडियो कॉल एंड डिस्कस ऑल ऑफ दिस विद योर मेंटर्स, जो बी स्कूल से हो सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। सो दैट्स एन अमेजिंग अमेजिंग थिंग। चॉइस ऑफ लैंग्वेज भी है, जिस लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में सेशन कर सकते हो, सेशन को प्री बुक कर सकते हो। एंड लास्ट चांस टू गेट इनटू द टॉप बी स्कूल्स इन 2022, ये है हमारा मासेट का बैच, एकदम प्यारा सा। मासेट इज द लास्ट एग्जाम जिसमें एक टॉप बी स्कूल मिल सकता है, दैट्स JBIMS। Ask a doubt is now available on the website also guys। You can ask up to 3 doubts at a go। ये बहुत प्यारी चीज है। दूसरा ये कि you can get solutions in your preferred language, आपकी जो भी language of choice है। और तीसरा ये कि you can request a review for your solution if you feel that the solution is not right, then you can request a review for that also। तो ये सारी ही चीजें हो रही हैं। Alright, let's get started with our article for the day। शुरू कर देते हैं। Transmitted, ये हमारे words हैं और ये हम हैं, और ये हमारी पार्टी हो रही है। पार्टी तो नहीं हो रही, पहले तो चॉप ही हो गई थी। एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्रांसमिटेड का मतलब होता है कम्युनिकेटेड। समथिंग इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो हमने वो बात कन्वे कर दी, कम्युनिकेट कर दी। ऑल्सो ट्रांसमिटेड कैन मीन स्प्रेड। सो डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो वो स्प्रेड। जैसे चाइना में अभी अभी कोविड-19 का फिर से बहुत तेज ट्रांसमिशन हो रहा है। इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड वेरी क्विकली, सो दैट इज ट्रांसमिटेड। इनएविटेबल इज समथिंग दैट इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, जो होगा ही होगा। सो गेटिंग कोविड-19 इज इनएविटेबल फॉर ऑल ऑफ अस। सबको होगा ही होगा, कब होगा ये नहीं पता, लेकिन होगा। Pinnacle, of course we know pinnacle, it is the height of something। हमें पता है टॉप पॉइंट जो होता है किसी भी चीज का, वो पिनिकल कहलाता है। replete with, you are full of, आपका पेट भर चुका है। we are replete with something, right? तो एकदम पेट भरा हुआ, हा feeling happy about it। trope is an idea, so a particular thing that is going on is a particular trope, ठीक है। so the trope of reading comprehension, that we need to do well in reading comprehension, ऐसे करके बोल सकते हैं। सो इट्स एन आइडिया। Aesthetic of course is related to beauty, so some people have a great aesthetic sense। for example my mother has a great aesthetic sense, तो वो हर चीज को बड़ा सुंदर तरीके से सजाना चाहती हैं, सजाती भी हैं। मेरा क्या है, मेरा कोई aesthetic sense नहीं है। I just put things together, I just try and keep neutral colors and put them together and just that's it, for comfort and for ease। मेरा कोई sense of beauty है ही नहीं है। so zero aesthetics। Stigma of course is a curse, is a बदनामी, एकदम बुरा नाम हो जाना, धब्बा हो जाना। It's a black mark on you, so stigma of course।
And resilience is the strength to withstand any negative thing that happens to you. तो कोई भी बुरी चीज हो जाए, आप उसको withstand कर सकें, आप में वो ताकत हो, उसको कहते हैं resilience. A lot of us have a lot of resilience, some don't, right? So that's resilience. So here are your words for the day. Transmitted, inevitable, pinnacle, replete with trope, aesthetic, stigma, and resilience. All right, let's get started with our article today. The problem with Han. कल मैंने आपको बताया भी था कि हम ये आर्टिकल करने वाले हैं. कोरियन एस्थेटिक्स पे था, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था. So there's a small piece of it that I have cut for you guys, and let's do this one. Okay. For much of the 20th century, Han has played a significant role in the self-definition of Koreans. So Koreans अपने को जैसे define करते हैं, उसमें Han is a very important thing, concept, role. It became a particularly important cultural concept starting in the 1960s. So 1960s से एक बड़ा important cultural concept बना when South Korea embarked on a concerted effort to overcome the tragedies of the recent past. तो जब recent past की tragedies से निकलने की कोशिश करी साउथ कोरिया ने, तो ये एक बड़ा important चीज निकल के आई. Colonization by the Empire of Japan from 1910 to 1945. The first division of the country into North and South following the defeat of Japan in the Second World War. So divide भी हो गए. And the devastation of the Korean War. तो Korean War भी हो गया, तो उसका भी devastation हो गया. तो इन सब के बाद इन्होंने जो है ये trope पकड़ा, और that of Han. Even after South Korea took its place on the global stage as an emerging economic powerhouse, so even when they became powerful, when they started becoming powerful, the stigma of Han remained. So ये जो बुरा एक निशान था ना, वो रह गया. Han not only pointed to all the sorrow and rage from the traumas inflicted on the people by the historic events, but also described the unique ways in which they carried and dealt with the experiences. So Han is not just pointing out to the sorrows and the anger of the trauma, but it is also the many ways in which the Koreans have handled it, these traumas. Ultimately, Han came to signify a kind of Korean dash defined by strength and resilience in the face of inherent sadness and pain. तो inherent sadness और pain के face में Koreans कैसे उसे handle करते हैं, उसका एक depiction हो गया Han. The trope of Han took powerful hold of the Korean imagination. So the Koreans have this concept of Han in their imagination, in their thoughts, in their minds. In the cultural realm, major literary figures such as the novelist Park Kyung-ni, 1926 to 2008, and the poet Ko-eun, 1933 to whatever, among many others, claimed Han to be the central aesthetic principle in Korean art and literature, applicable even to popular media products such as TV dramas and film. So they said that Han is a major part of our culture, and it is something that is part of our films, of our literature, of our writings. Everywhere you will find Han. When explaining the term to non-Koreans, it became commonplace to insist that one could not understand the people without comprehending Han. So what they said was, if you want to understand the Koreans, you need to understand Han also. While also claiming that only a Korean could truly grasp it. So you also said that सिर्फ एक Korean ही समझ सकता है कि Han क्या है. और अगर आपको Korean को समझना है तो Han समझना ही पड़ेगा. Very self-defeating this thing, huh? The influence of Han reached a pinnacle with the release of the film Saepyeonje, 1993, by the celebrated director Im Kwon-taek, about practitioners of the traditional singing storytelling art of Pansori, a work replete with the aesthetics of Han. So Han का जो मतलब beauty है, जो उसका pinnacle था, that they reached with this movie, right? इस director की इस movie से नाम भूल गई मैं, जहाँ पे आपको story telling के art के बारे में बताया गया था, and storytelling of course was replete with Han. The movie was a domestic blockbuster, the highest grossing film up to that time, but it also proved to be the last hurrah of Han's cultural significance. So this was the last time when they really glorified Han in a big way.
When a cultural idea is transmitted from a country, South Korea, to immigrants from that place to another land, Korean Americans, there is an inevitable lag as well as a translation process that sometimes results in distortion. तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से वहां जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन होगा. कम्युनिकेशन में हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन होता है. दिस ऑफन अकर्स अक्रॉस जनरेशंस. सो जनरेशंस में तो डेफिनेटली होगा ही होगा. व्हेन अ नोशन इज पास्ड डाउन टू दोज हु आर नॉट फ्लुएंट इन द लैंग्वेज ऑफ देयर एंसेस्ट्री, तो जब आप अपने एंसेस्टर्स की लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं है तो वो जो डिस्टॉर्शन है वो होगा ही होगा. द केस ऑफ हान प्रोवाइड्स अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस. सो हान इज एक्चुअली अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ communication may be distorted because of language, because of generation and such like. So I hope you found this article to be interesting. Let's take a look at our question. What is the purpose of the passage? To describe the life of Koreans in the US, to introduce the writers from Korea, to reveal the idea of Han, or to denigrate the concept of Han. Let's quickly take a look, guys. Guys, please hit the like button, all of you. And thank you for being such darlings. Archit, Deepti, Manish, Shruti, Dipali, Satun, Sharanya, Jayesh, Anas, Shruti, Aman, Garv, Shubham, Sachin, Aman, Harsh, Rashmi Rekha, Fareeq Ahmed, Priya, Sachin, Akash, Satyam. Thank you, Dipali. Neil, good morning. Neil, how are you? Krishna, good morning. Swayashi, good morning. Nick, good morning. I started getting my answers. Wonderful, you guys. Yes, good morning, Sonam. How are you? Pompia, good morning. How are you? All right, yes, to describe the life of Koreans in the US. No, it was not about Koreans in the US. Eliminate. To introduce the writers, not just introduce the writers, introduce the entire trope. So no. Yes, to reveal the idea of Han. What is Han? Yes. To denigrate, to say something bad about the concept of Han. Has the writer till now said anything bad about the concept of Han? He has not, and therefore denigrate, not really. So best answer, yes, was C, which I do see a lot of you have given. So good job, you guys. All right, let's go to the second question. Which of these is suggested in the passage? Koreans are inherently sad. Koreans were colonized by Japan. South Korea is an economic powerhouse. Han is claimed to be the central aesthetic principle in literature. So which of these is inferred and not mentioned in the passage? Good morning, Anjali. I'm very fine, guys. We're very warm today in Lucknow. I'm going crazy with the heat. I'm sweating like anything, but hey, what to do? Today I'm going to buy an AC for this section of my house immediately. There is an AC in this room. It's a big room. So यहाँ पे आ ही नहीं रही है हवा. मैं एकदम पागल हो जा रही हूँ. So need to get this fixed. All right, now I'll tell you what, Koreans are inherently sad is something that we cannot pick from anything that is suggested in the passage, okay? Koreans were colonized by Japan, of course, this was inferred, so not really inferred, this was actually mentioned in the passage, so this cannot be inferred, right? They were colonized from 1910 to 1945, that was mentioned there. South Korea is an economic powerhouse. Now the passage guys said that South Korea, when it was starting to be an economic powerhouse, pay attention to the words. That means after that it did become an economic powerhouse. So therefore this is the one that you can infer. Okay, Han is claimed to be the central aesthetic principle in literature is actually mentioned in the passage, guys. So this one is a fact. So cannot be my answer. So correct answer will be C, that South Korea is an economic powerhouse. This was not mentioned, just the complementary information is there when South Korea was on the way to becoming an economic powerhouse. So अगर वो on the way था तो finally बन ही गया होगा, right? ये complementary information है. Alright, which of the following can be the tone of the author? Fatafat dekho. Han not only pointed to all the sorrow and rage from the traumas inflicted on the people by the historic events, but also described the unique ways in which they carried and dealt with the experiences.
quickly guys. Is it skeptical, excited, opinionated, or pedantic? Guys, please hit the like button, all of you. There are so many people in class. सब लोग like कर देंगे तो मेरा life sorted हो जाएगा. Your likes make my life. Yeah. ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे स्केप्टिकल नहीं होगा, एक्साइटेड नहीं होगा, पेडेंटिक नहीं होगा, ओपिनियनेटेड होगा. राइटर बता रहा है हान के बारे में कि हान क्या क्या चीजों को पॉइंट आउट कर रहा था. सो यस, द करेक्ट आंसर इज सी, ओपिनियनेटेड. Alright, let's go to the filler here. Ultimately, Han came to signify a kind of Korean dash defined by strength and resilience in the face of inherent sadness and pain. तो क्या ये वैनिटी है, डिविएशन है, इनफिडेलिटी है, या एक्सेप्शनलिज्म है? ऐसा क्या है कोरिया के बारे में जो हान सिग्निफाई कर रहा है? Ten more people need to like the session. कर दो भाई, कर दो. Alright, the correct answer yes will be, क्योंकि Han is coming to signify a kind of something that is special to Koreans, right? So a kind of exceptionalism, a kind of exceptional quality जो सिर्फ कोरियंस में है और किसी और में नहीं है. तो वैनिटी नहीं हो सकता है, कोरियंस की वैनिटी नहीं है, ये तो उनकी सैडनेस है जो डिस्प्ले हो रही है. कोरियंस का डिविएशन नहीं हो सकता है, बिकॉज दैट विल नॉट वर्क हियर. कोरियंस की इनफिडेलिटी भी नहीं वर्क करेगी. इनफिडेलिटी कैसे, अगर वो एक पर्टिकुलर ट्रोप को फॉलो कर रहे हैं कि अरे कोरियंस तो सैड होंगे ही होंगे. सो दैट कैन नॉट बी द ट्रोप ऑफ deviation or infidelity or vanity. So yes, exceptionalism की हमारा thought process ये है कि हम sad रहेंगे, तो that is their exceptionalism, guys. Alright guys, so today of course at noon we've got our vocab quiz. आज power open house नहीं है, open house Monday, Wednesday और Friday को होगा. So Monday, Wednesday and Friday at 10 PM we are going to be doing the open house. तो वो उसके लिए ready रहना, वो Monday, Wednesday और Friday को होगा. ठीक है, बाकी हमारे क्विज हर रोज होती है, तो आज भी होगी 12 बजे. बाय द वे गाइस, एक बात बता देती हूँ, परफेक्शन बैच जो है आज के लिए स्टॉप्ड है, क्योंकि मैं समहाउ कोर्स बना नहीं पाई थी और नए क्लासेस ऐड नहीं हो पाए थे. तो आज मैंने 5 PM पे एक स्पेशल क्लास लगा दी है परफेक्शन बैच के लिए ही, प्रैक्टिस क्लास. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो द लिंक एंड कम. ओके, मैंने शेड्यूल में लिंक डाल दिया है, उसको फॉलो करके आ जाना. ठीक है, so that's that. And of course 8 PM पे beginners batch तो है ही है. Alright, thank you so much guys. Remember to hit like, share, subscribe and the bell icon. Without your subscription, without your likes, we are nothing. And of course guys, if any of your family, friends, anybody is trying to subscribe to Unacademy, please ask them to use CAT Live and take a 10% off on Unacademy courses, all courses, whether it is K-12, whether it is IIT, whether it is NEET, whether it is Bank PO, SSC, कुछ भी है, तो रेफरल कोड आप CAT Live यूज कर सकते हैं. तो प्लीज यूज करो CAT Live and get your 10% off. Also connect with me for all sorts of mentoring. किसी भी कोर्स में कुछ भी पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हो. I will direct you, I will guide you to the best mentors who are there. Thank you so much everybody. You have been a wonderful set of audiences. Thank you for staying
even when the session was mute. Love you all. Thank you. Bye bye. Have a nice day. I'll see you at noon, guys.